हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू iExamBee। एम्ब्रेस द iExamBee लर्निंग एक्सपीरियंस। सेबी का नोटिफिकेशन फाइनली आ गया है विद ऑल द डिटेल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जाम पैटर्न रिलेटेड टू सिलेबस। आपका फेज 1 का एग्जाम 27 जुलाई को है और फेज 2 का एग्जाम 31 अगस्त को है। लेट्स लुक एट द डिटेल्स इन द नोटिफिकेशन। This is a recruitment PDF. You can download this from the description below. Online application form is starting from June 11 and will last up to 30th of June. Phase 1 is on 27th of July and Phase 2 is on 31st of August except for IT stream. IT stream के लिए paper 2 of Phase 2 will be on 14th of September. कोडिंग का पेपर अलग से होता है, इस बार भी अलग ही है। Coming to the vacancies and education qualification. For general there are 62 vacancies. Master degree or postgraduate diploma of minimum 2 years is required in any discipline, or you can have professional degree of law, engineering, you can be chartered accountant, CFA, company secretary, cost accountant. In legal there are 5 vacancies. Mandatory education qualification is bachelor degree in law. Desirable is 2 years post qualification experience. For IT stream there are 24 vacancies. Education qualification can be bachelor degree in engineering in any branch or bachelor degree in any discipline with a postgraduate qualification in computer science, computer application, IT from a recognized university. For research, there are 2 posts, master degree, postgraduate diploma in economics, commerce. इन सभी streams में master degree, postgraduate diploma हो सकता है for this research stream. You can read this out. Please note, candidates are permitted to apply for maximum of 2 streams only for which he or she is eligible to apply. तो आप 2 streams के लिए अप्लाई कर सकते हो, दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। Request for change or correction in any particulars will not be entertained. The candidates can be posted in any department irrespective of the stream for which they are selected. Final year candidates are also eligible to apply. Candidates who have appeared for final examination are eligible to appear for phase 1, phase 2 or phase 3. However, offer to join SEBI to selected candidates will be subject to production of necessary documents evidencing successfully obtaining the requisite qualification. The date of passing eligibility examination will be the date appearing on the mark sheet or provisional certificate. Age limit is as on 31st of March 2024. Candidate must not have exceeded the age of 30 years as on March 31, 2024. Coming to mode of selection, phase 1, phase 2, phase 3 है। phase 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज कॉमन फॉर ऑल। पेपर 1 कॉमन होता है, पेपर 2 स्ट्रीम वाइज होता है। इन पेपर 1 देयर विल बी 80 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स। QRE GA 4 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चंस हैं ऑफ 100 मार्क्स। द मिनिमम कट ऑफ इज 30%। फेज 1 में मेरिट क्राइटेरिया ही है। फेज 1 में आपको पेपर 1 पेपर 2 को मिलाकर 40% मार्क्स लेने हैं, दैट मीन्स 80 मार्क्स आउट ऑफ 200। सो फेज 1 का पैटर्न एंड फेज 2 का पैटर्न एग्जैक्टली सेम रहा है एज पर लास्ट रिक्रूटमेंट्स। In paper 2 general stream, you will have multiple choice questions from these 6 subjects which have been explained earlier as well. Legal stream, research stream, IT stream में multiple choice questions होंगे on specialized subject related to stream. यहाँ पर आपके पास 50 questions होंगे of 100 marks. Negative marking present है, 1/4 negative marking present है। 30% मार्क्स पेपर 1 में लेने हैं, 40% पेपर 2 में एंड ओवरऑल 40% मार्क्स लेने हैं। कमिंग टू योर फेज 2 एग्जामिनेशन, पेपर 1 कॉमन है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर सभी स्ट्रीम्स के लिए होगा। Then for general stream, there will be multiple choice questions on the 6 subjects commerce, accountancy, management, finance, costing, companies act, economics. यहाँ पर आपके पास 50 questions ही होंगे, 100 marks के MCQ टाइप ही होंगे। लीगल पेपर में आपके पास 1 MCQ पोर्शन है, 1 डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, जैसा 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फॉर IT, paper 2 is your coding paper. For research stream, paper 2 is descriptive exam to test practical in-depth knowledge and drafting skills in economics, financial market and statistics. Paper 2 of Phase 2 of Information Technology stream shall be held separately on September 14, 2024. Paper 1 will be conducted along with other streams. Then there will be interview. आपके Phase 2 की weightage 85% है, interview की weightage 15% है. For legal and engineering stream, this weightage is further divided into interview and relevant post qualification experience. Interview को 75% weightage दी हुई है और relevant post qualification experience को 25% weightage दी हुई है। Then coming to service conditions, there will be a probation period of 2 years. The pay scale of officers in grade A is 45,500 with subsequent increments. Gross pay
per month without accommodation is rupees 1,55,000, and there are various other benefits, other allowances like LFC, medical allowance, conveyance expenses, briefcase, house cleaning allowance, and many other allowances. You can check out the other details from this PDF. This is attached in the description. We will move to the syllabus once. अगर आप जनरल का सिलेबस देखेंगे, सिलेबस एग्जैक्टली सेम ही है, सभी टॉपिक सेम है एज पर 2022 रिक्रूटमेंट. यू कैन चेक दिस आउट. सिमिलरली लीगल स्ट्रीम में सिलेबस इज सेम एज 2023 रिक्रूटमेंट. 2023 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसकी वेटेज के अकॉर्डिंग ही सिलेबस है. फॉर पेपर 2 इन फेज 1 दिस इज द वेटेज एंड द सिलेबस फॉर IT स्ट्रीम. एंड कोडिंग पेपर में आपके ये 4 टॉपिक्स हैं, इनकी वेटेज भी दी हुई है. दिस इज ऑल्सो एग्जैक्टली द सेम. So you can check out all these details and start your preparation. If you need any form of guidance, any form of preparation material, you can also check out our SEBI courses. We have online courses for SEBI Legal, SEBI IT, SEBI Grade A General, SEBI Research. So we provide guidance, study material, mock test for all these streams. You can check out our courses. If you have any doubts, any queries, you can write them down in the comment below. Enroll with iExamBee and make your preparation 50% faster. Thank you so much for watching this video. Subscribe to our channel. Stay tuned.